Let us start with today's lecture. This was the homework in the last lecture. Have you solved it? Question numbers 1 to 3, 41 to 44 of Foundation Builders Objective, and question numbers 1 to 23 of Foundation Builders Objective. ठीक है, दोनों सॉल्व किया है, FBO FBS दोनों किया है. डाउट्स कर लें पहले. One second, let me open the book. No doubts in FBO. FBS में डाउट है क्वेश्चन नंबर 18. Fourteenth and 18th. 14th sum is also a doubt. ठीक है. Let us discuss 18th sum first, and then we'll discuss. So, I am getting more question numbers. One second, let me note down all the numbers. PS question number 18, 14, 20, then FBO question number 42. Okay, fine. These are the doubts of everyone. Let me discuss these doubts. Okay, let me open the booklet. I will discuss the question number 42 first. FBO question number 42. The hydrated salt Na2SO4.10H2O undergoes X% loss in weight on heating and becomes anhydrous. The value of X will be Na2SO4.X2O dot 10H2O loses 10% of weight on dehydration. 10x%. X% of weight on dehydration. This means percentage of water present in Na2SO4.10H2O is X%. We have to find out basically the percentage of water present in. ठीक है? तो basically percentage of water निकालना है. एक सेकंड रुकना. तो मास परसेंटेज निकालना सिखाया था मैंने. We'll use
A similar approach, we will find out the mass percentage of water in an aqueous of water and H2O. So mass percentage of water will be mass of water upon total mass into 100. तो पहले molecular mass calculate कर लेते हैं. Molecular mass will calculate that 2 sodium atoms, 2 into 23, 1 sulfur, 4 oxygen, and 10 H2O. H2O का molecular mass calculate करोगे तो 18 आएगा. सब ऐड करो 46 plus 32 plus 64 plus 180. So 46 plus 96 plus 180. 142 and 42 plus 180 is 240, 322. Okay. Now percentage of water. Is equal to mass of water, that is 10 into 18 upon 322 into. Understood? That is around 55.9%. Avani, is it clear? Okay. Now, there's one more doubt in FBS, that is question number 8. Okay. FBS का 8, 14, 20 and 18. Okay. Now let us discuss FBS question number 8. Find the charge in coulombs on 1 gram ions of N3 minus. 1 gram ions of N3 minus is equal to 1 mole of N3 minus ions. Is equal to Na ions of N3 minus. Charge on 1 N3 minus ion is equal to 3E, minus 3E, which value is minus 3 into 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Therefore, charge on 1 mole of N3 minus ions will be equal to Na into 3 into 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs. तो Na का वैल्यू पुट करेंगे 6.022 into 10 to the power 23 into 1.6 into 10 raised to minus 19.
ये मल्टीप्लाई कर लो 96.47 समथिंग आएगा. This comes out to be around 28.9 into 10 to the power 4 coulombs. क्लियर है ये? आंसर नहीं मैच हो रहा क्या इसमें? क्या डाउट है अवनी? इज दिस क्लियर? वेरी गुड. Next we'll do question number 14. How many iron atoms are present in a stainless steel ball having a radius of 0.1 inch? The steel contains 85.6% iron by weight and has a density of 7.75 grams. तो पहले बॉल का वॉल्यूम निकालो, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल मास निकालो, फिर परसेंटेज ऑफ आयरन से मल्टीप्लाई करके आयरन का मास निकालो, ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन निकालो. देखो क्या अप्रोच हम सॉल्व करते हैं. एक सेकंड रुकना.
रेडियस दिया हुआ है 0.1 इंच. We'll convert this into centimeters. 0.1 inch is how many centimeters? It is equal to 0.254 centimeters. Because 1 inch is approximately equal to 2.54 centimeters. So volume is equal to 4/3 pi r cube. मैं पूरा कैलकुलेट करके आंसर नहीं निकालता हूँ, बट इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा. सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया. मास ऑफ बॉल is equal to volume into density. So 4/3 into 0.254 ka whole cube into density is given as 7.75 grams per cc into 7.75 grams. Mass of Fe will be how much? 85.6% is iron. So mass of ball into 85.6 by 100. Then number of moles of Fe will be mass of Fe upon its gram atomic mass, that is 56. And then number of atoms of Fe will be this multiplied by Avogadro's number. समझा to everyone? ये किसका डाउट था? क्वेश्चन नंबर 14. Vatsal, understood? ठीक है, good. Yes, Aditya. बोलिए. Yes, so could you go back one page for a second? Yeah. Yes, so yes, I'm done. You can lower your hands. ठीक है. So this is, we'll do question number 14, 18 and 20. We'll do question number 18. Turn करूं page. Now we'll do question number 18. Zone in. ठीक है. तो बहुत आसान है. वॉल्यूम ऑफ ओजोन ले लो V. तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है 600 माइनस V. ये ml में लिया, मान लो हमने वॉल्यूम. ठीक है. तो number of moles of ozone will be, this is volume at NTP. Number of moles होता है volume divided by 22.4 liters. ml में करेंगे तो VML upon 22400 ml. आ गया V by 22400. Moles of oxygen, (600 minus V upon 22400). Mass total is equal to mass of oxygen plus mass of ozone
is equal to moles of oxygen into its molar mass, moles of ozone into its molar mass. वैल्यू दिया हुआ है, टोटल मास 1 ग्राम दिया हुआ है. Moles of oxygen 600 minus V by 22400 into 32 plus V by 22400 into 48 is equal to 1. तो आ जाएगा ये 22400 is equal to 600 into 32 minus 32V plus 48V. ठीक है, तो आ जाएगा 192,200 plus 16V is equal to 22400. So 16V is equal to 224 minus 92 is 192 is 832, 3200. V is equal to 200. The volume of ozone is 200 ml. Answer. Understood? 18th question. सोहम का डाउट था ना? Understood? समझा कैसे करना है? Good, very good. और कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 20. ये नोट कर लो. A drug, marijuana, owes its activity to tetrahydrocannabinol, which contains 70% as many carbon atoms as hydrogen atoms, and 15 times as many hydrogen atoms as oxygen atoms. Number of moles in a gram of. ठीक है, करता हूँ ये क्वेश्चन. एक सेकंड. It contains 70% as many carbon atoms as hydrogen atoms. ऐसे फॉर्मूले में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है. ठीक है, फिफ्टीन टाइम्स एज मेनी हाइड्रोजन एटम्स एज ऑक्सीजन एटम्स. सपोज ऑक्सीजन एटम्स x है, ये 15x होगा. एंड कार्बन एटम्स विल बी 70% ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. 70 by 100 of number of hydrogen. So 0.7 into 15x is equal to आ जाएगा 1.05x. ठीक है, समझा? ये फॉर्मूला हो गया. कार्बन 1.05x, हाइड्रोजन 15x, ऑक्सीजन x. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. हाइड्रोजन 15, ऑक्सीजन 1. इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कार्बन 10. हाइड्रोजन 150, ऑक्सीजन 10. एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने?
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा कार्बन 21, हाइड्रोजन 300 एंड ऑक्सीजन 20। गड़बड़ आ रहा है, इतना तो ज्यादा हो नहीं सकता है। क्या किया है मैंने ये? हाँ हाँ हाँ, सॉरी, मिस्टेक समझा मुझे। ये 10.05 आएगा, 10.5x। हाँ अभी आया। कार्बन 10.5, हाइड्रोजन 15, O2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन 21, हाइड्रोजन 30 एंड O2। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। 12 into 21 plus 30 plus 2 into 16. 252 plus 30 plus 32। तो ये कितना आ जाएगा? 252 plus 62. 252 plus 62 is 314. Now let us find out molecular mass. How can we find out molecular mass? Molecular mass is indirectly given. It is given that number of moles in 1 gram is 0.00318. Number of moles is equal to mass upon gram molecular mass. एरिया हुआ 0.00318 is equal to 1 by m। तो इससे m का वैल्यू आ जाएगा ना, वन अपॉन 0.00318। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी 314 आ गया। तो n is equal to molecular mass upon empirical formula mass, ये 1 आ गया। तो therefore molecular formula is also same as empirical formula। C21 H32 H30 O2 H32। अंडरस्टूड? ठीक है, तो डाउट्स हो गए, अभी आगे कंटिन्यू करें। So let us continue with the regular lecture. Doubts के बाद we'll do हमने empirical formula molecular formula तक किया है।
Next topic we'll do is mole analysis of a chemical reaction. Mole analysis of a chemical reaction. Analyzing a chemical reaction in terms of number of moles. Number of moles के terms में analysis. What type of analysis? To determine the number of moles of products formed from given number of moles of reactants, or to find out how many moles of reactants are required to form a given number of moles of products. So this is very easy to do in terms of number of moles. And number of moles can be converted to mass or volume as required. We have done this before. So we can use this analysis to calculate the masses of substance formed for a given mass of reactants, or the masses of reactants required for a given mass of products. Okay. In this section of the chapter, mole analysis of a chemical reaction. Okay. There are two different methods. The basic principle behind both these methods is same, but approach is slightly different. We'll write the two different methods. One is the stoichiometry. Another is POAC. POAC stands for Principle of Atom Conservation. So let us do them one by one. ठीक है, सबसे पहले stoichiometry करते हैं. Stoichiometry, this is applied in a balanced chemical reaction. This method is applied or applicable in a balanced chemical reaction. One second. Now let us continue. Yeah, only in a balanced chemical equation.
The method is designed in such a manner that if the reaction is not balanced, we'll first balance it, okay, and then we'll apply this method. Not balanced, and then we will first balance it. Let us consider a general balanced reaction. Suppose balanced reaction is as below. So small a, small b, small c, small d are the coefficients. Okay. For every valence reaction, there are some coefficients for reactants and products. Okay. The small a, small b, small c, small d are called as these coefficients or the stoichiometric coefficients. Are called stoichiometric coefficients. What are stoichiometric coefficients? These are coefficients of reactants and products in a balanced chemical reaction. The coefficients in a balanced chemical reaction are called as stoichiometric coefficients. Capital A, capital B are the reactants. Capital C, capital D are the products. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. यहाँ पे मैंने एक जनरल रिएक्शन लिया जहाँ पे दो रिएक्टेंट्स और दो प्रोडक्ट्स हैं. We have taken a reaction where we have two reactants and two products. But we may have various types of reactions having only one reactant and two products, two reactants and only one product, one reactant and only one product, and many various types of reactions are possible. Okay? Just for a sake of simplicity, I have taken this example. Many reactions, not most of the reactions, but many reactions belong to this category where we have two reactants and two products. Okay? Let us do some examples of balanced chemical reactions and how to balance it. Okay? We'll use hit and trial method to balance right now. There is a specific way to balance redox reactions which we'll study separately. Okay? Examples of some reactions and balancing them. An example is combustion of hydrocarbons. CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. Now let us try and balance it. Okay, CH4 has only one carbon, so CO2 coefficient will be 1. Coefficient 1 need not be written. नहीं भी लिखेंगे तो coefficient is 1. CH4 has 4 hydrogen atoms, so H2 coefficient 2 put करेंगे, number of carbon और hydrogen balance हो गया. Now let us try and balance the number of oxygen. In the product side, we have 2 plus 2, 4 oxygen atoms to 2 O2. Now the reaction is balanced. The coefficients are 1, 2, 1 and 2. ठीक है, 1 need not be written. 1 हमेशा लिखा नहीं रहता है. ठीक है, अगर coefficient 1 है तो we may not write 1. बस ऐसे simple ऐसे ही लिखेंगे. तो 1 is implied. तो यहाँ पे coefficients क्या आ गए? Coefficients are 1, 2, 1 and 2. So these are the stoichiometric coefficients. Understood? हमेशा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है. देखो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं. C2H6, this is ethane molecule, plus O2 giving CO2 plus H2O. Okay, now let us try and balance it. C2H6 has
2 carbon atoms, so 2 CO2. C2H6 has 6 hydrogen atoms, so 3 H2O. Carbon and hydrogen are balanced. Now counting the number of oxygen atoms. Here we have 4 oxygen atoms. Here we have 3 oxygen atoms, total 7. We'll put 7 by 2 here. So that total number of oxygen atoms comes out to be 7. This is the number of oxygen atoms. ठीक है? Coefficients हम fraction में रख सकते हैं, but convention is such that we always write the coefficients as whole numbers. We'll multiply the entire reaction by 2 to get the coefficients in whole numbers. We'll multiply the entire reaction by 2 to get the coefficient in whole numbers. We'll get C2H6 plus O2 giving CO2 plus H2O. Multiplying by 2, the coefficients will now become 2 C2H6, 7 O2, 4 CO2 and 6 H2O. Understood? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, you try it on your own. Fe3O4 plus CO giving Fe plus CO2. Try करो, try and balance this. We'll be back in a minute.
आया क्या? 1434 is the correct answer. Hans, yes, 1434 is the correct. Very good. थोड़ा सा देखो, मैं कैसे करेंगे, हम हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करेंगे, बट उसमें भी एक सिस्टमैटिक वे अप्रोच फॉलो कर सकते हैं. जैसे Fe3O4 has 3 Fe. Let us first balance the iron atom. ठीक है. Now carbon atoms are already balanced, but oxygen is not balanced. तो अगर इसका कोफिशिएंट 2 रखेंगे तो इसका भी 2 रखना पड़ेगा. ठीक है. अगर इसका 3 रखेंगे तो इसका भी 3 रखना पड़ेगा, बिकॉज कार्बन की बैलेंसिंग हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. तो लेट अस अज्यूम दैट किसका कोफिशिएंट हमने ए रखा, तो इसका भी ए आ गया. अभी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इधर कितना आ गया, 4 + A, और इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2A आ गया. दोनों इक्वल होना चाहिए. 4 + A is equal to 2A. We'll get A is equal to 4. Therefore, we get the balance reaction as Fe3O4 plus 4CO. We get the balance reaction as Fe3O4 plus 4CO, giving 3Fe plus 4CO. Coefficients are 1, 4, 3, and 4. Clear है ये? Is this clear? Understood everyone? आ रहा है समझ में? सौम्या, केशव, सार्थक, मृगय, good. These are very basics of mole concept, but basic concept should be very clear. Basics ही apply करके we solve some difficult problems. There is no extra concept to be applied. Chemistry में advantage ये है कि if we are thorough with the class notes, if you are thorough with the booklet, it will help you in your, it will be almost sufficient. Nothing extra is required. In that sense, chemistry is a bit easier than physics and maths. Because physics and maths, you'll have challenging problems in the test paper or in the exams. It's not, chemistry में ऐसा नहीं होता. बहुत challenging problems, बहुत rare ही आते हैं. अगर तुमने थोड़ी अच्छे से करी है, notes thoroughly किया है, you'll be able to do it. But maths and physics, you will get some new challenging problems. You'll have to apply your mind and try and solve it. Chemistry में कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन, but कम. Okay. So in that sense, chemistry is easier. But difficulty कहाँ जाती है chemistry में? अभी तक हमने बहुत सारा तो हम फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स कर रहे हैं. डिफिकल्टी कहाँ जाएगी, जहाँ we have things to memorize and things to learn, things to by heart. तो डिफिकल्ट तो नहीं है, बट लेजीनेस होती है. पीपल गेट लेजी टू बाय हार्ट थिंग्स. तो और बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं कि तुम इसको भी मान लो, ऐसे ही मान लो. तो हमेशा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएंगे. ये क्यों मान लें सर, अब ये कैसे हो गया, ये कैसे आ गया. देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज, बिकॉज केमिस्ट्री इज वेरी वेरी एडवांस्ड साइंस, वेरी वेरी एडवांस्ड. मतलब बहुत एडवांस्ड फिजिक्स यूज होता है केमिस्ट्री में, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत एडवांस्ड फिजिक्स और एडवांस्ड मैथ्स होता है. तो बहुत सारी चीजें हम इस लेवल पे एक्सप्लेन नहीं करते. इट इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस. ठीक है. एंड वी आर नॉट डूइंग एनी रिसर्च वर्क तो नहीं कर रहे हैं. तो हमारा टारगेट है एग्जाम्स क्लियर करना, और एज मच एज पॉसिबल जितना हम समझ सकते हैं उतना समझ के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना. We'll try and understand as much as possible. Okay? And we'll not try waste our time. Okay? Because we have limited time, we have to complete a lot of syllabus. ये सारी चीजें ध्यान में रखना है. तो बेसिक कंसेप्ट पे बहुत ही क्लैरिटी रखो. बेसिक्स क्लियर रहेंगी, you will get good marks in chemistry. चलो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं. In our times we used to have subjective papers for JEE. ठीक है. JEE में 2 पार्ट होता था. अभी जैसे JEE मेन और JEE एडवांस होता था ना, होता है ना. जैसे हमारे टाइम में IIT JEE स्क्रीनिंग और IIT JEE मेंस होता था. IIT JEE स्क्रीनिंग वाज एन ऑब्जेक्टिव पेपर, and IIT JEE मेंस वाज अ सब्जेक्टिव पेपर.
मुझे याद है सब्जेक्टिव पेपर में, फिजिक्स के एक पेपर में आया था, डिराइव द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर हम जेई के सिलेबस में कभी नहीं पढ़ते। वर्नियर कैलिपर्स वी डू इन लैब्स, ठीक है, फिजिक्स के लैबोरेटरी में। आई डोंट नो तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया है, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू, गॉज, ये सब हम लैब में करते हैं। तो लैब में, लैब मैनुअल में कभी तो हमने लिखा था कि हाउ डू वी डिराइव दी वर्नियर लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लैब मैनुअल में कहीं तो लिखा था, जिन लोगों को याद था उन लोगों ने कर दिया, ठीक है। मुझे जहाँ तक याद है मैंने शायद किया था ये। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो तुम्हारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं कभी भी। तुमने मतलब साइंस इज मेनली एप्लीकेशन पार्ट, तो केमिस्ट्री में तुम लैब वैब जो करते हो ना, प्रैक्टिकल्स, तो प्रैक्टिकल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। हम प्रैक्टिकल बेस्ड केमिस्ट्री का एक अलग चैप्टर ही करेंगे। विल डू प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विल डू प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे चैप्टर्स भी इम्पोर्टेंट हैं। बट अगर स्कूल में कुछ प्रैक्टिकल्स होता है, कुछ प्रैक्टिकल में तुम लोग लिखते हो, तो उस चीजें ध्यान रखना, मतलब टोटली इग्नोर मत करना। that may help in your JEE exams. उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। Don't totally ignore it. It's not very important, but don't totally ignore it also. ठीक है? Suppose we have a hydrocarbon whose formula is CXHY. Its combustion giving CO2 and H2O. Write the coefficients, okay, of oxygen, carbon dioxide, and H2O in terms of X and Y. Assume that coefficient of CXHY is 1. इसका coefficient 1 assume करके, ठीक है, ऑक्सीजन, CO2 और H2O के कोफिशिएंट्स निकाल के बताओ in terms of X and Y. What will be the coefficients of carbon dioxide, water and oxygen in terms of X and Y? ठीक है, करो। Yes, good. X is 1. X और Y की वैल्यूज नहीं पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। X और Y के टर्म्स में हमें कोफिशिएंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कोफिशिएंट ऑफ H2O लिखना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। In the reactant side we have X carbon atoms. In the product side we'll have X carbon atoms, so it will be X CO2. In the reactant side we have Y hydrogen atoms, so we'll put Y by 2 H2O. X CO2 and Y by 2 H2O, the number of carbon and hydrogen atoms are balanced. Now let us try and balance oxygen atoms. Suppose oxygen ka coefficient A. You'll get 2A is equal to, left hand side oxygen atoms आ गए 2A, right hand side oxygen atoms आ जाएंगे 2X,
plus y by 2. So we'll get 2a is equal to 2x plus y by 2. यहाँ से आ जाएगा a is equal to x plus y by 4. तो ये ऑक्सीजन का कोफिशिएंट आ जाएगा. So entire balance reaction can now be written as CxHy plus O2 giving CO2 plus H2O. We'll write the coefficients in a different color. This is x plus y by 4 O2. This is x CO2. This is y by 2 H2O. So this is the entire balance reaction. It's a general reaction for any hydrocarbon, combustion of any hydrocarbon. Understood? Similarly, we can write combustion reactions for an alkane. देखो alkane general formula is CnH2n plus 2 plus O2 giving CO2 plus H2O. ठीक है, इसको बैलेंस अगर करेंगे, we have n carbon atoms, so n CO2. We have 2n plus 2 hydrogen atoms, so n plus 1 H2O. Now if you balance the oxygen atoms, this is 2n plus n plus 1, so 3n plus 1 by 2 O2. This is the general balance reaction for an alkane. CnH2n plus 2 is the general formula for an alkane, where n is the number of carbon atoms. तो ऐसे हम बहुत सारे different reactions को balance कर सकते हैं. ठीक है? Understood? Now, what is the stoichiometry analysis? What is the stoichiometry analysis? Okay, as per this analysis in stoichiometry, we say that in any reaction, the reactants are consumed and products are formed. एक second रुकना. In any reaction, the reactants are consumed and products are formed in the mole ratio of their stoichiometric coefficients. In the mole ratio of their stoichiometric coefficients. Okay. In any reaction, the reactants are consumed and products are formed in the mole ratio of their stoichiometric coefficients. Okay. तो क्या मतलब हुआ इसका? अगर रिएक्शन है A plus B C plus D, so we'll say that number of moles of A reacted or consumed is to number of moles of B reacted or consumed is to number of moles of C produced is to number of moles of D produced is equal to small a's to small b's to small c's to small d. So number of moles of reactants consumed and the number of moles of products formed are always in the ratio of their stoichiometric coefficients. So this is what we mean by stoichiometric analysis. Moles are in the ratio of their stoichiometric coefficients. तो अगर किसी एक reactant या product के moles पता है, तो हम stoichiometric coefficient के help से
बाकी सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय द यूज ऑफ दिस रेशियो। आ रहा है समझ में? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टर्न करूं पेज? ठीक है, नेक्स्ट देखो। We can write this equation in various different forms. We can write it as moles of A upon A is equal to moles of B upon B is equal to moles of C upon C is equal to moles of D upon D. Na is the moles of A reacted, Nb is the moles of B reacted, Nc is the moles of C produced, and D is the moles of D produced. Okay. So if we know the number of moles of one of the reactants or products taking part in the reaction, we can find the number of moles of other reactants and products by using this equation, by using the ratio of stoichiometric coefficients. Okay. With the help of stoichiometric coefficients. ठीक है? Examples देखो. Suppose reaction is
CH4 plus O2 giving CO2 plus H2O. The question may, you can say that if number of moles of CH4 is 4 moles of CH4 has reacted, then number of moles of oxygen will be 4 into 2 is equal to 8. Number of moles of CO2 will be, coefficient is 1. They are in 1:1 ratio. So 4 into 1 is equal to 4. Number of moles of H2O will be coefficient 2 है, तो 4 into 2 is equal to 8. ठीक है. तो अगर CH4 के moles 4 हैं, तो 4 moles of CH4 will react with 8 moles of oxygen to produce 4 moles of CO2 and 8 moles of H2O. So in statement we can write 4 moles methane, CH4 is methane, react with 8 moles oxygen to produce 4 moles CO2 and 8 moles H2O. ठीक है, क्लियर है ये? आ रहा है समझ में? Note it down quickly. Is it done? आन्या हो गया? Good. So another example, suppose we have the example of ethane, 2C2H6 plus 7O2 giving 4CO2 plus 6H2O. Okay, this is the valence reaction. We can write the number of moles of ethane, oxygen, carbon dioxide, and H2O in terms of their stoichiometric coefficients. Their moles must be in the ratio 2:7:4:6. अगर C2H6 के moles 2x हैं, तो oxygen के moles 7x हैं. 2x moles of ethane will react with 7x moles of oxygen to produce 4x moles of CO2 and 6x moles of H2O. Okay. Or we can also write, okay, if y moles of C2H6 reacts, then 7/2 y moles of O2 will react, resulting in formation of 2y moles of CO2 and 3y moles of H2O. The number of moles reacted and the number of moles formed must be in the ratio of their stoichiometric coefficients. So we can write it in either way. Suppose इसमें हमें किसी एक के moles पता है, ये भी सही है. Suppose it is given that moles of oxygen reacted is 5. बाकी सबके moles निकालने हैं. So we can write 7x is equal to 5. X is equal to 5/7. तो सबके moles आ जाएंगे. Moles of C2H6 is equal to 2x is equal to 10/7. Moles of CO2 will be equal to 4x is equal to 20/7. Moles of H2O will be equal to 6x is equal to 30/7. ठीक है? If moles of oxygen reacted is known, we can solve it. ठीक है? Y लेके भी हम कर सकते थे. Y लेके अगर solve करेंगे, तो
we'll get 7 by 2y is equal to 5, तो y is equal to 10 by 7. फिर आ जाएगा moles of C2H6 is equal to y is equal to 10 by 7. Moles of CO2 is equal to 2y is equal to 20 by 7. And moles of H2O is equal to 3y is equal to 50 by 7. तो y के टर्म्स में भी आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कि डिफरेंट आ जाएगा. तो x एंड y कैसे चूज करना, दैट डिपेंड्स ऑन अस. ठीक है, बस एक किसी एक रिएक्टेंट के मोल्स को एक वेरिएबल के टर्म्स में अगर लिख लेंगे तो बाकी सारे रिएक्टेंट्स के मोल्स को हम उसी वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. ठीक है, आ रहा है समझ में ये? Is everyone getting this? ठीक है, ये नोट कर लो. अभी हम इतना ही करते हैं, फिर 10 o'clock के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. We'll continue this in the 10 o'clock lecture. Bye. Thank you. Have your breakfast and let's meet again. ठीक है, एंडिंग द लेक्चर. ओके, सबने नोट कर लिया ना? Has everyone noted it? Thank you.